Sairam children, we start our today's class with Omkar thrice, and all of you please join your hands and start chanting of Omkar thrice. Om. Sairam children, in previous class when we started this chapter, acid, bases and salts, there were some kind of technical problems. So I would like to start this chapter from the beginning. Okay, Sarthak, your mic is not working, no problem. You are listening properly, listen carefully. So first I would like to show you a video regarding the indicators. You are able to see the three lights on the introduction, these are the three indicator light of traffic. Anumega, you are able to see it, Peter? Yes, sir. Okay. Just as we have indicators for traffic that tell us when to stop and when to move ahead, we have indicators for substances that tell us if the substance is acidic. So just like indicators for traffic, if there is a red signal, all of you know, it means stop. If there is a yellow light, it means ready to go. And if there is a green signal, it means yes, you can move forward. Like these three indicators, we have indicators for acidic and basic substances. The meaning is that we have some substances. These substances may be synthetic, may be natural. To decide, to check, to tell us whether the given substance is acidic or basic. You can see better. Here are three types of indicators: acidic, basic and neutral. And three substances are given. First one, vinegar. Second is caustic soda solution. And third is distilled water. And two colorful strips are used as an indicators to check whether the given substance is acidic or basic or neutral. Neutral is also Acidic, basic, or neutral. Sometimes it's quite easy to identify whether a solution is acidic or basic. okay. Even without using indicators, we can say the given substance either acidic or basic or neutral. But many a times it is difficult to tell about the nature of the substance. Is the given substance is acidic or basic or neutral? In that conditions, we have to use indicators for deciding the given substance is acidic or basic. For instance, try categorizing these substances on the basis of taste. Okay, I would like to ask questions. Just guess, later we decide. What is coffee? Acidic, basic or neutral? Basic. Okay. Neutral. I'm not reaching on the conclusion. What is your opinion about the orange juice? Acidic. Acidic. Okay. Lemon juice? Acidic. Acidic. Okay. Kunan water? Neutral. Okay. You don't know about the Kunan. Okay. I will tell you Kunan.
One more thing I would like to add. Please keep your mic mute. What do you think? Sugar solution. Keep your mic mute. Sarakshi, keep your mic mute. What is your opinion regarding the sugar solution? Is acidic or basic? Neutral. Okay. Neutral. What is salt solution? Acidic or basic? Basic. Sir, neutral. 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 Okay. What I am not reaching on any conclusion. What do you think? Milk. Base. Basic. Why? How can you say is a base? It is only guessing. Yes, sir. Okay, but we all know that in milk, when milk convert into curd, and which acid present in curd? Citric acid. Lactic acid. It is lactic acid. Lactobacillus bacteria are responsible to convert milk into curd. It means this bacteria, this acid may be present in the this milk also, but it is in very small quantity. Let's see. Acidic substances taste sour, while basic substances cause a bitter taste. Okay, this is one of the initial statement regarding the acid and bases. With the taste, we can decide. Acids are sour in taste and bases are bitter in taste. But is it safe to check any chemical substances by taste? No. No, because we don't know what is present in a laboratory. In any beaker, the substance may be any chemical, though we can't use by just by taste we can decide. So this is not the safe way. Okay, eatables can be decided by the taste, but not other things. Based on that, we can say that lemon juice and orange juice are acidic, while coffee and quinine water are basic in nature. It means by taste, these two are acidic substance, and coffee and quinine water, these two are basic solutions or basic substance. Now, sometimes what happens, we drink tea after our dinner or lunch, or we prefer coffee also. Is it good to take, or is it not good to take? We will discuss about it. Here is one fact. Components of toothpaste as well as cup syrup are basic or alkaline. This alkaline is also But one of what alkaline is also one of the name of basic. In place of basic, you can say alkaline. I will come to this point with the H ion or OH ion. So components of toothpaste as well as cup syrup are basic. However, they do not taste bitter because flavors are added to them to hide the bitter taste of the alkaline ingredients. So we all are very much familiar with the taste of toothpaste and the cough syrup, because generally we use every day we use toothpaste, and when we have problem of respiratory system, then we take cough syrup. So both are basic, but they are not bitter in taste because a kind of flavor added to them. Why? Just to hide the bitter taste of the alkaline ingredients. So sometimes taste also confuses us if artificial flavor added to it. Okay, beta? But what about These two chemicals are given here. The first one is H2SO4.
Can anybody tell me the chemical name of H2SO4? Vyom? Adit? Are you able to hear my voice? Sulfuric acid. Very good. Sulfuric acid. Sulfuric acid. It is sulfuric. Sulfuric acid. Very good. Very good. Very good. Okay. Okay. Stop. And do you know what is household ammonia? Do you know about the window cleaner? Choline? Yes, sir. That is household ammonia. Okay. So these two are the acidic substance or basic substance will decide. Substances that you can't taste or even touch. So these two we can't taste or touch. So we can't use our taste buds to decide whether the given substance in first beaker H2SO4 or second, that is ammonia, household ammonia, is acidic or basic. So it is difficult, and we should never try to check by taste to decide whether the given substances are acidic or base. हमको कभी भी टेस्ट लेकर, उनको पीकर या जीभ से टच करके उनके टेस्ट को डिसाइड नहीं करना है. Only eatables available at home, we can decide only that thing, not all, especially the substances or materials available in the laboratory. Even eatables are there in the laboratory, but we should not taste. If there is a sugar, if there is a salt, we should not taste. Because many times when we handle the sugar and salt in the laboratory, we touch them by our hands, and our hands are maybe in contact with acidic or other substance. So don't try to check anything available in the laboratory by taste. This is very important. Take care. You can use indicators to find out the nature of such substances. Indicators means what? Weak organic substances that dissociate slightly in solution producing ion. This definition, don't think more about this definition, because you are not studying right now about the ions and all. Okay? Weak organic substances that dissociate slightly in solutions producing ions. The pH of the solution determines the color of the ions produced. pH is the hydrogen ion concentration of a solution. Only if you want to keep this pH, how to write the pH, this is also very important. This is very important. Just see, this is pH. This is H ions, means hydrogen ions. Hydrogen ion concentration of solution. Acids Sir? have high concentration of H plus ions. Yes. Sir, what is oxalic acid? Oxalic acid present, one of the acid. I will tell you it is present in which substance. Okay. Yes, sir. So these are the common acids and common bases. HCl. What is the name of HCl? Can anybody tell me? Just Hydrochloric acid. Very good. It is hydrochloric acid. What is NaOH? Can you read the name? Sodium hydrochloride. No, beta. It is quite. It is sodium hydroxide. What is its name? Sodium hydroxide. What is H2SO4? Just you give answer. It is sulfuric acid. What is KOH? It is potassium hydroxide. And HNO3, it is nitric acid. And CaOH2, it is calcium hydroxide. From 8th standard, you have to keep these names in your mind.
But if you start remembering from 7th onwards, it will be very helpful. Okay, hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid, HNO3 nitric acid, NaOH sodium hydroxide, KOH it is potassium hydroxide, CaOH2 it is calcium hydroxide. So what is common in the group of acids and bases? Just see, H is present in all the acids and OH is present in all the bases. Whose mic is working here? Beta, take care of your mic. It should be mute. Otherwise, it disturb all of you, all of us, me also. Is it clear? And if I will stop my presentation again and again, it will break the link. So this is common. H present in acids and OH present in bases. And bases have high concentration of OH minus. So H ions present in acids, OH ions present in bases. And what is pH? It is H plus ion concentration of a solution. If you want to, please note down these 3 lines. Very important to understand the details meaning of acid and bases. Is noted down? Noted, sir. Ions. Okay. Now, next thing. The chart shows some examples of how indicators change color based on the pH of a solution, helping us identify. This is not in your syllabus, so you don't worry about it. This pH indicators, this is not in your syllabus, but simply you just learn, you understand. Indicators help us identify the exact nature of substance based on its color change in accordance with the pH of the solution. Just see beta, methyl orange, red to yellow, phenolphthalein colorless to pink, litmus red to blue, and from acidic, neutral, and basic. Identify the nature of that solution. Indicators can be of 4 types. We discussed that there are 2 types of indicators. The first one is natural indicator. This is and synthetic indicators. These 2 are in our syllabus, and all of you know that in litmus, China rose, and what is third? Turmeric. Turmeric. These 3 are in our syllabus. Litmus, China rose, and turmeric. And what is the name of synthetic indicators? Phenolphthalein. These 4 indicators will talk, and the 4th one is synthetic indicators. Is it clear, beta? Click an indicator to learn more. The first one is about natural indicators. Natural indicators are plant or animal extracts used to identify acids and bases. So, natural indicators, what they are? Plants and animal extract. This natural thing make them natural indicators, and they used to identify the nature of any substance. Examples are rose petal extract, Yes. beet juice, red cabbage juice, turmeric solution, and litmus paper. I would like to repeat again. Just see. Natural indicators are plant or animal extracts, turmeric solution, and litmus. Examples are Red rose. How many of you have red rose in your garden? Sir, colorful Sir, I- rose. Sir, I. I Okay. also. Very good, very good, very good. Sir, I have pink rose. Very good, Catherine also has. So
You have China rose also. You have Yes, sir. you have you have. Okay, Soumya, you don't have China rose. No problem. Sir, If I you, have. but you have turmeric at your home. हल्दी तो सबके घर में है Yes. Yes, sir. और मम्मी Yes, sir. और आजकल तो मम्मी दूध में हल्दी मिला के पिला रही है ना रोज। Yes. अगर दूध में हल्दी अच्छी नहीं लग रही है तो आप पानी में हल्दी मिला के पी सकते हैं। इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी। यस योगिता। सर Yes, sir. टर्मरिक सर अगर जिंजर डाल देते हैं मिल्क में तो फिर अच्छा लगता है मिल्क। यस सो हमको क्या खाना है? जिंजर भी खाना है, ब्लैक पेपर काली मिर्च भी खाना है, हल्दी भी खाना है और बहुत ज्यादा बाहर की चीजें तो बिल्कुल नहीं खाना है। नो कोल्ड ड्रिंक्स। सौम्या हैज रेड एंड पिंक रोजेस। वेरी गुड सौम्या। अब एक काम करेंगे, आदित्य म्यूट योर माइक। एक काम तो सभी लोग कर लेंगे। टर्मरिक सभी के घर में है। यस सर। जिसके घर रेड रोज है बहुत अच्छी बात है, नहीं है और भी अच्छी बात है। और चाइना रोज जिसके पास जो है, कहीं बाहर जाने के लिए जाना नहीं है लाने के लिए, बी केयरफुल। आपके घर में कुछ नहीं है तो आपके घर में टर्मरिक हल्दी तो अवेलेबल है ही। अब क्या करना? अच्छा आप लोग शादियां अटेंड करते हैं ना? कभी पहले करी होंगी? यस सर। यस सर। अच्छा जरा अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। यस अग्रिमा भी आ गई है। सो जब हम शादियां अटेंड करते हैं तो पता चल जाता ना, या कैमरा ऑन करते हैं तो कौन सो रहा है कौन जाग रहा है सब दिख जाता है। कुछ लोग तो लेट के स्टडी करते हैं। ऐसा भी है क्या? क्या सोनी जी लेटे तो नहीं थे? वेरी गुड। तो आपके घर में सभी के यहाँ हल्दी तो अवेलेबल है। और शादियों में आपने किसने देखा है कि अपने यहाँ वो शादियों में पीठ पर हल्दी ऐसे बोल के ऐसे पीठ पर मारते हैं? देखा है आपने? यस सर। यस सर। ठीक है। मामा की शादी में मारा। हाँ तो ऐसा हल्दी जब आप किसी के पीठ पर ऐसा थप्पा लगाया, पंजा लगाया जाता है उसका, फिर उसके बाद तो वो शर्ट बड़ी अच्छी रहती है, बिल्कुल व्हाइट शानदार कॉटन शर्ट। और पीछे से कोई आया, माइक म्यूट योर माइक लोकेश। ओके। और पीछे से कोई आया और ऐसा देखा है ना? अब आप ये देखिए, आप क्या करना है कि अब आपने, आपकी मम्मी ने वो शर्ट, आपकी पापा की जो शर्ट थी उसको साफ भी तो करना है, खराब तो कर नहीं सकते। तो क्या किया? दो ऑप्शंस है यहाँ पर। एक ने क्या किया, उसको पहले सुखा दिया विदाउट वॉशिंग, धोने के लिए नहीं दिया, उसको सुखा दिया। और दूसरी लेडी ने क्या किया, उसको बढ़िया साबुन लगा लगा के धो दी। किसका काम सही है? राम किसने सही किया? साबुन से धोया बोल। सर दूसरी। सर साबुन से धोना। साबुन से सर धोया। सुखा दिया। सर सुखा दिया वो। सर अगर सूख जाएगा तो फिर वो निकले तो और नहीं। ओके 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 ओके। अब चलो एक काम अपन कर सकते हैं घर में। अब मैं आपसे ये तो नहीं करूंगा कि पहले किसी की शादी करवाओ, फिर हल्दी की रस्म करवाओ, फिर पापा की शर्ट खराब करवाओ, फिर घर पे लेके आओ, फिर मम्मी से धुलवाओ। ऐसा तो नहीं हो सकता, इज नॉट पॉसिबल। अभी तो वैसे ही किसी की शादियां नहीं हो रही है, और हो भी रही है तो अपन लोग जा ही नहीं पा रहे हैं, है ना? तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ी सी 1 स्पून टर्मरिक ले लीजिए, थोड़े से पानी में ले सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए ये पानी भी रखा हुआ है, आप चाहे तो पानी ले सकते हैं मुझसे। और थोड़ा सा पानी इस प्लेट में डाल दीजिए, ठीक है? और हो सकता है सैटरडे को मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और आपसे भी बोलूंगा करके दिखाइए ऑन कैमरा। जितने भी हिमालय हाउस के येलो येलो वाले हैं उनके लिए कंपलसरी है येलो टर्मरिक, ओके? और जितने भी सह्याद्री हाउस वाले हैं रेड रोज, फॉर देम चाइना रोज इंडिकेटर्स।
ओके, कैथरीन को हाउस मिला ही नहीं है ना अभी, गायब ही हो जाती है। तो इसमें आप थोड़ा सा पेस्ट बना सकते हैं टर्मरिक का, बन गया। अब पेस्ट बनाने के बाद क्या करना है आपको वो भी मैं बताता हूं। ये एक पुराना कोई कार्ड ले लीजिए, ये मेरे पास एक पुराना इनविटेशन कार्ड था, ऐसा आप ले लीजिए कोई कार्ड और उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप बना लीजिए। इज इट? स्ट्रिप काट के बना सकते हैं, और वो स्ट्रिप काट के बना लेंगे और उसको इसमें डाल दीजिए। किसमें? इस पेस्ट में डाल दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये आपके पास कोई कार्ड है, बेटा योगिता इधर ध्यान दो, वो काम बाद में करना, छोड़ो उसको। ध्यान दे रही हूँ। नहीं, ये हाथ में जो खेल रही हो वो ध्यान नहीं दे रही हो, समझ में आया बेटा जी? सो एक पुराना इनविटेशन कार्ड लीजिए, उसका जो ब्लैंक एरिया रहता है जिसपे कुछ प्रिंट नहीं रहता, उस पर किसी ब्रश से उस टर्मरिक का जो पेस्ट है उसको अप्लाई कर दीजिए, तो ये पूरा का पूरा येलो हो जाएगा आपका। इसको ड्राई कर लीजिए, फिर ड्राई कर सकते हैं, यस, इसको ड्राई कर लीजिए। अब आपका असली काम शुरू होता है। फिर थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन लेना है, और सोप सॉल्यूशन लेके जो आपका पेंट ब्रश है, आरुष होगा बेटा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं हुआ। पेंट ब्रश जो होता है उससे आप इस कार्ड पर बढ़िया सा एक डिजाइन बना लीजिए, बना सकते हैं ना? उसमें मेरे लिए आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, आपकी मम्मी के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं, आपके भैया दीदी जो राखी आ रही है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो सोप सॉल्यूशन कैसे बनाना है? अरे मेरे, क्या खतरनाक क्वेश्चन है, वेरी गुड लोकेश। आपके घर में सोप है? यस सर। वेरी गुड। उसको थोड़ा सा ये पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा उसको डिजोल्व कर लीजिए। थोड़ी देर ऐसा ऐसा पानी से करेंगे तो सोप वाटर आपका उसमें आ जाएगा, ठीक है? यस सर। और उसमें कंसंट्रेशन सोप वाटर का बेहतर होना चाहिए। आरोस आपके साथ यही हुआ होगा। आरोस आपने जो किया है उसके साथ यही हो सकता है कि आपका सोप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वीक होगा। तो बढ़िया, आप लोकेश माइक म्यूट करिए। तो पेस्ट करके फिर इस पर आप राखी का मैसेज लिख सकते हैं, मेरे लिए भी कुछ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई एम रेडी टू रिसीव योर ग्रीटिंग कार्ड ऑनलाइन, यू कैन शो मी योर विशेस टू मी, नो प्रॉब्लम। सो आप देखिए कि इसमें सोप सॉल्यूशन का करेंगे तो क्या होगा। कैथरीन, कैन यू गेस? Sir, it will change to red color. It will turn to red color, so we'll get a very fine drawing on the greeting card. Yes, and so what is present in the soap solution? Adit, acid or base? Base. Agrima, acid or base? It is base. Yes, Soumya and Sarakshi giving answer. It is base. Yes, you are right. So what we can conclude कि turmeric, which is a natural indicator, turn base to which color? Red. अगर हमारा turmeric जो sheet है, if it turns to red, it means given substance is basic substance. तो मम्मी अगर उसको साबुन से धोएगी उस शर्ट को, तो वो तो शर्ट बेकार। क्यों शर्मा जी, है ना? सो हम क्या करेंगे उसको बताइए, पहले उसको येलो में कन्वर्ट कर दो। यस, वी हैव टू ड्राई दैट शर्ट। व्हेन इट कंप्लीटली ड्राई, देन स्टार्ट रबिंग, सो मोस्ट पार्ट ऑफ द टर्मरिक विल कम आउट थ्रू द पाउडर फॉर्म. Okay, try to add lemon juice. How turmeric react with lemon juice? That is acidic substance. करके देखिए। तो ये काम करेंगे। हिमालय हाउस वाले बच्चे अपना अपना नाम बताएं। हिमालय हाउस वाले बच्चे कौन कौन से हैं? अनुमेघा मॉल। यस, ओके, यस,
अर्पिता कौन सा हाउस है? विपुल? सर अर्पिता विपुल का सह्याद्री है। तो जिसका भी हिमालय हाउस है वो मुझे टर्मरिक की एक्टिविटीज करके दिखाएगा। इज इट क्लियर? और जितने सह्याद्री हाउस वाले हैं वो चाइना रोज की करके दिखाएंगे। अच्छा, आपको मालूम है चाइना रोज आपके बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है? यस सर। आपको पता है? कंडीशनर। यस, आई टोल्ड यू समझे, है ना? तो सर आपने चाइना, बोला। यस, तो चाइना रोज का जो वाटर, चाइना रोज को कैसे एक्सट्रैक्ट निकालेंगे? उसको चाइना रोज के फ्लावर्स को कलेक्ट कर लीजिए और उसके पेटल्स को निकाल लीजिए, रिमूव पेटल्स फ्रॉम द फ्लावर, एंड थोड़ा सा गर्म पानी पहले उसमें गर्म पानी में डाल देंगे और फिर उसको थोड़ा सा बॉइल करेंगे तो उसका कलर पानी का चेंज हो जाएगा। या अब आपको एक बाल्टी पानी लेने की जरूरत नहीं है, 1 glasses of water. This 1 glass of water is okay, sufficient. So you boil and extract what is present in the China rose, or check it with the acidic and basic substance. Can you do it? Say yes. यस सर। Yes, sir. Very good, very good, very good. तो आप सभी लोग कोई भी कर सकते हैं, हिमालय हाउस और सह्याद्री हाउस, ये तो जस्ट मजाक कर, नीलगिरी और विंध्याचल वाला। मैं वही बोल रहा हूं कि आपको सभी लोगों को ये दोनों एक्टिविटीज करनी है। राम, चिंता मत करो। ओके? यस सर। आदित्य बेटा, आदित्य, सिट क्वाइटली देयर, है ना? व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग योरसेल्फ? एंड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू कीप योर कैमरा ऑन. So these two activities compulsory for all. Saturday I will see. Okay? And one more thing I would like to ask you, and who will come as a volunteer? Our 4th chapter was heat. Yes? Anyone of you want to give presentation of chapter heat? सर may I? Yes? सर बताओ। Yes. So give your names. Anumega, Soumya, Vyom. Okay, first these three, Anumega, Soumya, and Vyom. Okay, first 3 selected. Then I will ask later. Don't write now. How you want to give your presentation on the chapter? It is up to you. Okay, you can make your PowerPoint presentation, or you can explain by yourself. Is it clear? Yes? So please keep your camera on. Vyom और कौन था? सौम्या and Anumega. Where is Soumya? Okay, Vyom, which part you would like to cover? The modes of transfer of heat. Okay, transfer of heat. Anumega? Sir, clothes during winter and summer. Okay. And Soumya? Soumya disappear. Okay. If Soumya is not there, Soumya left the meeting, then before Amay, Laksh, you decide and inform me, okay? So maximum 5 minutes, 3 to 5 minutes, okay? Now Soumya join, so she will be the 4th one. Second Anumega, third Laksh. And if time permits, then I will Soumya also. Is it clear to all? Okay, let us see what happens. Just see, this is red rose, a beautiful rose. Rose petal extract, beet juice, red cabbage juice, turmeric solution, and litmus paper. These are the natural indicators. Let's consider red china.
See again. Examples are rose petal extract, beet juice, red cabbage juice, turmeric solution, and litmus paper. Let's consider red China rose juice. In acidic medium, this juice turns reddish. Okay. In a basic medium, however, it turns green. Green. So you have to perform activities and you can see, you can show it. This is China rose juice. I asked you how to extract China rose juice from petals. And आपका base है. Colin, that is this glass cleaner, that is base. It takes 1 minute. It is already expired. Wait. Let's summarize what we've learned so far. Indicators can be of 4 types. Click an indicator to learn more. Natural. In a basic medium, however, it turns green. So this China rose change its color reddish and green with base. Similarly, Beetroot. beet juice change. Beetroot means, can anybody tell me the beetroot? Kandar. What is it? Chukandar. Kandar. Changes from red to purplish in a basic solution. Turmeric solution shows red color in a base. Yes. I am not asking you to do with the beetroot. Because turmeric easily available. Red cabbage juice shows a wide range of color changes for different strengths of acids and bases. This is quite interesting. An overview of natural indicators and how they behave. This is a final conclusion of these natural indicators and their color in acid and in base. China rose petals in acid red, in base green. Beet juice in acid red, in base purple. Turmeric yellow in acid and red in base. Litmus red in acid and blue in base. Red cabbage juice shades of red with acid and shades of green and blue with base. In acidic and basic solutions is shown. So, Hydria flowers change their colors based on the acidity or alkalinity of the soil. Okay, we'll discuss later about the acidity, acidic nature of the soil and basic nature of the soil. So I hope you all understood what I would like to tell you today. As you know that I will show you the PowerPoint also. I wanted to show you today, but already maximum time we spend here. So in next class I will show, but be ready. You have to present your experiment and 3 presentation. First one, Vyom.
Second one, Anumega. Third one, Laksh. And if time permit, fourth one, Soumya. Okay, so join your hands for Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti. Sai Ram. Sai Ram, sir. Bye, sir. Sai